Well, am I audible? Are you able to see me? Okay, I welcome you all on this live stream. Walaikum Assalam, Nazir. Kausar Samad, Walaikum Assalam. Okay, fine. So let me introduce myself. My name is Arshad and I'll be teaching you English communication skills. Snow Barwani, Walaikum Assalam. Halima, Walaikum Assalam. Mari Mahrish, Walaikum Assalam. Akib, Walaikum Assalam. So this is the class of first semester and the title is English Communication Skills. So I hope you have bought your textbooks from the market. Abrar, Walaikum Assalam. Umar Farooq, Walaikum Assalam. Well, it's because of COVID that we are meeting online. Otherwise, we would have met in the classroom. Walaikum Assalam. So let's wait for 30 seconds, then we'll start the class. Tanveer, Walaikum Assalam. कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं, then we'll start the class. मीर हिना, वालेकुम अस्सलाम. सोफी उमर, वालेकुम अस्सलाम. शेख रमीज, वालेकुम अस्सलाम. मरियम, वालेकुम अस्सलाम. So let's start our syllabus. We'll first take up the poetry section. And poetry section is module 3 on your textbook. Toiba, walaikum assalam. So open page number 124 on your textbooks. The name of the poem is Marriages Are Made. Shall I start? Okay, fine. Before we take up this poem, we must understand what is the difference between prose and poetry. From our childhood days, we have studied poems, we have studied prose, but we must be able to differentiate between the two. Difference क्या है prose और poetry में? I'll be using bilingual method ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको भी. There is a difference. Are you able to hear me? Okay, we are discussing the difference between the poetry and the prose. The difference lies in the fact that in poetry the order of the words is different, while as in prose you'll have a clear language. There will be no use of figures of speech, there will be no decoration, there will be no ornamentalization of language, while as in poetry में आप क्या देखते हैं, figures of speech का use होता है, वहाँ पे metaphors का use होगा, similes का use होगा, और उस वजह से जो पोइट्री जो है वो एक किस्म से ब्यूटीफाई हो जाती है, ऑर्नामेंटलाइज होती है. तो एक किस्म से पोइट्री में देयर इज एन म्यूजिक जनरेटेड within the poem by the use of rhymes, by the use of rhythm and other literary devices, while as in prose we don't see that often.
तो इसीलिए पोइट्री और प्रोज में ये डिफरेंस है कि पोइट्री का ऑर्डर ऑफ वर्ड्स चेंज हो जाता है, क्योंकि पोइट जो है वो चाहता है कि पोइट्री के अंदर एक म्यूजिक जनरेट हो जाए, ताकि जो रीडर्स जो पोइम्स रीड करते हैं दे शुड गेट दैट एस्थेटिक प्लेजर while reading the poem. तो ये difference है between the poetry and the prose. And second difference lies in the fact that in poetry you have multiple interpretations. Obviously, when you read a novel, or for that matter any other piece of prose, there will always be limited number of meanings. But in poetry you have many interpretations. You can give as many interpretations as you like. तो वो डेप्थ जो है पोइट्री में वो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स से आ जाता है। वो पोइट जो है अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को उन पोइम्स में डालता है, तो उस वजह से और उनके ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की वजह से ये जो पोइट्री है ये डिफरेंट बन जाती है प्रोज से। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पोइट्री एंड द प्रोज। नाउ दिस पोएम मैरिजेस आर मेड, this is a poem written by Eunice D'Souza. Eunice D'Souza is an Indian English writer. She is an Indian English poet. और इस poem में you'll see that the institution of marriage जो हमने establish किया हुआ है that is being criticized. यूनिस डिसूजा है जो मैरिजेस हम ये बनाते हैं वर्ल्ड में, या वी सेलिब्रेट दोज मैरिजेस, देयर इज नथिंग इन देम टू सेलिब्रेट। वो मैरिजेस जो है दे आर अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है दैट इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, दैट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। और उस वजह से जब मैरिजेस की बात हम करते हैं, देयर इज एन आयरनी विद इन द टाइटल इटसेल्फ। Irony क्या है? We usually say that marriages are made in heaven, but here if you look at the title, she has used marriages are made. In a way she is saying that they are artificially made. There is nothing like heavenly in them, क्योंकि हमने marriages को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वो एक सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे आप पोएम में देखेंगे दैट द ब्राइड, उसके अंदर ऐसी ऐसी स्क्रूटनी होती है, उसके बाल देखे जाते हैं, हर टीथ आर चेक्ड, ठीक है, हर कंप्लेक्शन इज चेक्ड, और उसके बाद ही फैसला किया जाता है दैट वेदर मैरिज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो कि यूनिस डिसूजा बात कर रही है, वहां पे क्या होता है, एक लड़के वाले के घर से जब लड़की वालों के यहाँ रिश्ता लेकर आते हैं तो वो पहले चेक करते हैं कि लड़की पूरी तरह से ठीक है, क्या उसके पेरेंट्स जो है फाइनेंशियली साउंड है, और वेदर शी इज गुड लुकिंग, वेदर शी इज फेयर कम्प्लेक्शन, ये सारी चीजें देखकर ही देन दे डिसाइड वेदर वी शुड गो फॉरवर्ड विद द प्रपोजल और नॉट। तो अगर ये सारी चीजें बराबर नहीं होती है तो मैरिजेस आर नॉट मेड। So in a way the writer is trying to suggest that these marriages, they have a basis on this fact that women, they are objectified, they are treated in a way like, you know, they have no identity of their own. यहाँ पे भी the writer's cousin whose name is Alina, she is going to get married, but before she is married there are a lot of formalities that are done from the side of the groom. They check whether the father of the poet's cousin, is he financially sound, does he have the money to bear the expenses of the marriage, whether or not he is in debt, and then she is medically examined, she is examined for TB, she is examined for madness, and then after all these things, you know, her complexion is checked. तो ये सारी चीजें बराबर होने के बाद ही फैसला लिया जाता है कि हाँ जी ये लड़की जो है ये हमारे बेटे के लिए ठीक है। तो उस सेंस में जो यूनिस डिसूजा है इस पोएम में हमें ये बताती है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जहां पे फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और एक कमोडिटी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। तो इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि ये एक आयरॉनिक पोएम है, एक हार्श क्रिटिसिज्म है सोसाइटी का कि मैरिजेस जो है वो हेवंस में
बनी नहीं होती है, वो हम खुद बनाते हैं, फॉर्मेलिटीज देखकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पर्टिकुलरली जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो हमेशा ब्लेम जो है लास्ट में देती है किस पे? लड़की पे, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि ये लड़की जो है, हाँ, लड़के के लिए ठीक है या नहीं है। अदरवाइज अगर सारी फॉर्मेलिटीज, अगर सारी कंडीशंस जो पहले ही सेट की हुई होती है वो पूरी ना हो तो मैरिजेस जो है वो बनती नहीं है। तो उस सेंस में ये एक हार्श क्रिटिसिज्म है, ठीक है, सोसाइटी का, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का। So I'll first talk about a little biography of Eunice de Souza. If you look at your textbook, Eunice de Souza was born in Pune, India, in a Goan Catholic family. She did her master's in English literature from Mackay University, Wisconsin, USA, and PhD from the University of Mumbai, India. She served as faculty in English literature at St. Xavier's College, Mumbai. So she is an Indian English poet and she has done her PhD from the University of Mumbai. And then she was also a professor, a faculty member of English literature at St. Xavier's College, Mumbai. Till her superannuation in 2000. She retired in 2000. An outstanding Indian English poet, D'Souza introduced a new voice and defined a new sensibility in English poetry which questioned the supremacy of the male canon. In this poem, you'll see that she is directly questioning the male society, the male-dominated society. This is reflected in her being the only woman poet included in the Oxford Indian Anthology of 12 Modern Indian Poets. तो ये खास बात जो है यूनिस डिसूजा की है that she is included in the Oxford Indian Anthology of 12 Modern Indian Poets. That shows the literary recognition among Fix 1979, Women in Dutch Painting, Ways of Belonging, selected a new poems and learned from the almond leaf. She derives the subject matter of her poems from her personal experiences and her poetry comes across as a mosaic of her guilt, desire and revelations. You'll see the themes of guilt, you'll see the theme of desire and you'll see revelations within her poetry. She critiques the regressive practices in society and unjust and unfair treatment of women. That's what I was talking about. She talks about the condition of the woman, the subjugation of the woman. She not only raises issues of gender discrimination, but also presents a realistic picture of the socio-cultural and political conditions of her time. She talks about the society, the socio-cultural practices, the gender bias that we believe as a society. Raising questions related to the self, identity, and patriarchy, D'Souza makes a significant difference to the tone and quality of Indian English poetry, emerging thereby as one of the most powerful voices in contemporary Indian English women's poetry. Her sharp-edged irony and precise minimalist style earned her well-deserved critical acclaim and the Poetry Book Society Recommendation Award in 1990. So she is a very famous poet and she has received a Poetry Book Society Recommendation Award in 1990. So in a way, she is well recognized as an Indian English poet. Within her poetry, you'll see the discrimination against women, you will see other practices that she criticizes, which are prevalent within the society. Now let's look about the text. Marriages Are Made is a striking example of Eunice D'Souza's satire on the hypocrisy and prejudices associated with the institution of marriage. Well, what I was talking about, when we scrutinize a bride, whether she's fair complexioned, her teeth are okay, her health is okay, that is hypocrisy. We don't value the individual, we value the qualities within that individual. Okay, so in a way that becomes a sort of hypocrisy from the society. अगर fair complexion woman नहीं है तो हम marriage नहीं करेंगे, that's a fact. तो उस sense में marriages जो है, they have become an institution of hypocrisy, they have become an institution of prejudices, where gender identities are psychologically as well as socially and culturally determined.
It brings out in cryptic and bitter terms the stereotypical image of a woman as polite. अब देखिए हमारी सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है एक वुमन को. वो पोलाइट होनी चाहिए, submissive and self-effacing, willing to sacrifice her personal choices, feelings and happiness. In a way, she should be without an identity of her own. तो वो अपनी आइडेंटिटी को समझनी चाहिए कि जो मुझे कहा है वो मुझे करना चाहिए. वो हम एक वुमन की इमेज जो है एक्सेप्ट करते हैं. अदरवाइज एक इंडिविजुअलिटी, एक आइडेंटिटी हम वुमन को नहीं दे पाते हैं एज अ सोसाइटी. The protagonist is the lead actor within a text. The protagonist, Elena, is to be married, but the formalities that are carried out in the prenuptial preparations to approve of the prospective bride end up objectifying and demeaning her. तो यहाँ पे पोइम में क्या हो रहा है, अलीना जो है उसकी मैरिज होने जा रही है. तो और मैरिज ऐसे होने जा रही है कि लास्ट में ऑब्जेक्टिफाई उसको किया जा रहा है, उसको डिमीन किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी को कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है. The hallowed state of matrimony denoted through the hackneyed saying marriages are made in heaven is negated by the situation that is described in the poem. The truncated title Marriages Are Made brings home the stark reality of marriages and how the mundane truth of the social custom is opposed to the false glorification attributed to it. We glorify the institution of marriage. We say made in heaven. But then if we look at our society, ये एक hypocrisy पे ही जो है आजकल की marriages बनी हुई होती है. The title of the poem is therefore ironic as it foregrounds the hypocritical nature of society which enjoins women to yield to paternalistic ideology and patriarchy. The glorification of matrimony obscures its exploitative nature. So at the end, these marriages, they are exploitative. वो किसको exploit करती है? एक woman को exploit करती है. इस poem में भी देखेंगे आप जो ग्रूम के साइड से उनके रिलेटिव्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वुमन जो है क्या वो ठीक है. कोई क्वेश्चन इस पे नहीं आता है कि वेदर द ग्रूम इज ओके और नॉट. उसका कोई हेल्थ चेकअप नहीं होता है, उसकी कोई कंप्लेक्शन नहीं देखी जाती है, उसकी कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं देखे जाते हैं. जो भी देखा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का ही देखा जाता है. दैट शोज अ क्लियर बायस अगेंस्ट द जेंडर. लेट्स क्विकली रीड द टेक्स्ट. My cousin Alina is to be married. The formalities have been completed. Her family history for TB and madness. Her father declared solvent. Her eyes examined for squints. Her teeth for cavities. Her stools for the possible non-Brahmin worm. She is not quite tall enough and not quite full enough. Children will take care of that. Her complexion, it was decided, would compensate, being just about the right shade of rightness. To do justice to Francisco ex Noroha Prabhu, good son of Mother Church. अब देखते हैं कि इसमें ironic statements क्या है. Let's quickly analyze the poem. My cousin Alina is to be married. So the poet's cousin, whose name is Alina, she is to be married. The formalities have been completed. We all know the formalities of the marriages. Now here the formalities are a type of scrutiny. Scrutiny का मतलब है जांच की जाती है. किसकी? अलीना की, जिसकी मैरिज होने जा रही है. Her family history is examined for TB and madness. First of all, medical checkups are done कि क्या इसको टीबी तो नहीं है, क्या इनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है मैडनेस की. वो सारी चीजें चेक होने के बाद पहले तो हेल्थ चेकअप होता है, उसके बाद ये देखा जाता है. Her father declared solvent. Solvent means he is not in debt. क्या उसको कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है. अगर कर्जा होगा तो यूजुअली मैरिजेस जो है वो नहीं हो पाएंगे. Then her eyes examined for squints. Squints are the weaknesses in eyes. तो ये भी आंखों की भी जांच होती है लड़की की, क्या इसकी आंखें जो है वो ठीक है, क्या उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है. Her teeth for cavities. Look at these, small things that are examined. That shows a clear bias against a gender. Patriarchal society. This is an evil within the society. Her teeth for cavities. Even, they have stooped to such a level that her stools are being examined. Her stools for the possible non-Brahmin world.
Here also she criticizes, the word Brahman is used to criticize the casteist nature of the society, which believes in the caste system also. She is not quite tall enough and not quite full enough. Children will take care of that. So the point, she's trying to tell us that she is to a certain degree acceptable. She is not very beautiful, she is not very tall. Her complexion, it was decided, would compensate, being just about the right shade. और उसकी complexion जो है कहीं हद तक acceptable है, कोई ज़्यादा गोरी नहीं है, कोई ज़्यादा ये complexion इसका fair नहीं है, तो just acceptable complexion है. Being just about the right shade of rightness to do justice. This is quite ironic. This is sarcasm. To do justice to Francisco ex Noroha Prabhu, good son of Mother Church. Here, Francisco ex Noroha Prabhu is the groom within the poem. Alina is the bride. और ये कहा जाता है कि ये सारी चीजें देखकर ही ये जो है लड़की को एक्सेप्ट किया जाता है जस्टिस करने के लिए, किसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जिसका नाम है फ्रांसिस्को एक्स नरोहा प्रभु. एंड यहां पे भी एक आयरॉनिक स्टेटमेंट है लास्ट लाइन में, द गुड सन ऑफ मदर चर्च. इस ग्रूम को जो है कोई एग्जामिन नहीं करता है, कोई ये नहीं देखता है कि ये ठीक है या नहीं है, बस सिर्फ ये देखा जाता है कि लड़की जो है वो ठीक है या नहीं है. यहां पे लास्ट लाइन में, लास्ट की 3 लाइंस में यू विल सी दैट देयर इज अ क्लियर जेंडर बायस. ठीक है, और ये दिखाता है हमें एक डार्क साइड जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का है. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? साहिल वालेकुम सलाम, खान मुनीब वालेकुम अस्सलाम. समझ में आया कुछ? एज दिस इज योर फर्स्ट क्लास तो ऑनलाइन मोड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट आई थिंक आई हैव डन जस्टिस विद द पोएम. उबैद वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद उवैस, यस सर, ओके, दैट्स फाइन. So tomorrow again we'll discuss the question answers based on this poem, and many other things that are to come we'll discuss in the meantime. Okay, for now I take your leave. I'll meet you again tomorrow. Thank you very much.